Hey guys, welcome to my channel. My name is शीलू. सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को. और ये जो वीडियो होने वाला है द थ्रोन ऑफ अल्लाह माइंड ब्लोइंग, दिस इज़ ऑन चैनल मर्सीफुल सर्वेंट. एंड ये वीडियो के लिए मेरे पास बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी और बहुत से लोग नाराज़ भी हो गए थे बिकॉज आई वॉज टेकिंग टाइम टू डू रिएक्शन ऑन दिस वीडियो. एक्चुअली जब भी रिएक्शन बनाने बैठती थी ना तो दिमाग से निकल जाता था कि इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन बनाना है. तो एक या दो दिन पहले किसी का कमेंट आया है कि ब्लॉक कर दो ये चैनल को या ऐसा कुछ कर दो, क्योंकि वो भाई साहब बहुत नाराज़ थे या वो बहन जी बहुत नाराज़ थे. एक्चुअली नाम नहीं याद है मुझे, बट देन वो बहुत ही खफा थे मुझसे क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर रिएक्शन नहीं दिया है. काफ़ी टाइम हो गया है और सभी की रिक्वेस्ट आए हुए. तो फ़नी ऑजी का जो कन्वर्ट स्टोरी था उसके ऊपर भी बहुत सारे रिएक्शन आए थे, तो मैंने उसके ऊपर रिएक्शन बनाया है. अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको जाकर के ज़रूर देखिए. वो इंग्लिश में है. वो ऑजी नाम के एक बंदे का कन्वर्जन है. अबू बकर कन्वर्ट होकर के उनका नाम पड़ा. तो ही वॉज अ क्रिश्चियन देन एंड ही इज़ अ मुस्लिम नाउ. तो उनकी स्टोरी जो थी वो बहुत ही सुपर्ब अमेजिंग स्टोरी है. आप ज़रूर जाकर के उस वीडियो पे मेरा रिएक्शन देखिएगा. आपको उसमें हंसी भी आएगा, आपको उसमें गूज बम्प्स की फीलिंग भी आएगी. बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस आपको मिलेंगे वहाँ पे. ओके, तो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को. एंड अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा तो मैं खुद इंस्टा पे एक्टिव नहीं रहती हूँ, बट देन स्टिल मैं रिक्वेस्ट वहाँ से उठाती हूँ. एंड येस, उसमें भी इंस्टा पे भी मुझे रिक्वेस्ट आई थी द थ्रोन ऑफ अल्लाह के ऊपर रिएक्शन करने की. तो शुरू करते हैं वीडियो. 1 2 3 स्टार्ट. Okay, viewers, understanding is very important. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. All the praise is for Allah, who is the author of all existence and the most generous to his creation, while he is also the all-compelling. He is the only one worthy of our worship, having no partners, no associates, no sons, no daughters, no one whom he must consult, and no one or anything which has any comparison with him. All the praise is for Allah, who is the King of all who claim sovereignty, the only one who has the right to legislate for his creatures. He is the giver of life. He is the causer of death, while death has no effect upon him, because he is the ever-living, the self-subsisting, the eternal and the only absolute. All the praise is for Allah, who has power over all things, and there is in reality no power and no strength, no influence to cause benefit or detriment except through him. It is he who created this complex world, the seen and the unseen, the evident and the speculative, the earth and all that is on it, and everything that is in it. It is he who sent his messengers and prophets, alayhimus salam, with the common message of strict monotheism, which simply means that there's absolutely no one worthy of worship, no one worthy of our obedience except the Almighty, the One, the Absolute, and who has no partners. The earlier messages, which changed the world in the area in which the prophets were sent, those messages we know have changed, and even the prophets who brought them, their names are now lost.
We just know in general because Allah told us in the Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. I've sent to every nation a messenger, calling people to worship Allah alone and to avoid the worship of false gods. This essential message has been preserved in Islam in a way that it was never preserved before. Not because the message was different, because it was the same message, but because of the fact that there would be no other prophets who would come after Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So therefore that message now had to be protected. It had to be preserved in a way none of the earlier messages were preserved. I will tell you this, what you say you have come to know 40 years back, and what you call the Big Bang is already mentioned in the book which I read, the glorious Quran. It's mentioned 1400 years ago in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 30, which says, Avalam yaral lazina kafaru. Do not the unbelievers see anna samawati wal arda kanat ratkan fataqnahuma, that the heaven and the earth were joined together and we clove them asunder. What you're talking about, the Big Bang, I try to imagine compressing a spring. I push it closer and closer and closer together so it's smaller and smaller and smaller, and I've stored a tremendous amount of energy in that spring, and when I let it go, it bursts out, it bursts out, it bursts out. the creation of the universe, which you came to know 40 years back, is already mentioned in this book, the glorious Quran, 1400 years ago. Who could have mentioned that in the Quran? So the atheists will say, maybe someone wrote, maybe it's a fluke, maybe it's a guesswork. A human being, regardless of who they are, or where they are, or what they do, will have this curiosity. They'll want to know, why am I here? How did I get here? And do I have a purpose? And if so, what is it? The only one who would really be able to answer that question would be the Creator himself. If there is a Creator, it would be up to him to tell us why we were created and what he expects from us and what this life is really about. Allah has shown the people from the time of Adam until right now, has shown the people what he wants from them. And it's a very simple thing, and that is that worship be for him alone without any partners. In fact, we know this life to be a test from Almighty God. That's why we're born, and that's why we die. Because there has to be a beginning and an end for us to be tested on. The next life, after this life, no one will ever die again. A bad person or a good person. Both are brought back and they continue to live in the next life, either in good shape or not so good shape, depending on how they did on the test. The worship of the God of Abraham, that was what was taught by these prophets. The Lord of the Arsh and Kursi. We're talking about the Lord of the worlds. Alhamdulillah Rabbil Alameen. We're talking about the Lord of the entire universe and beyond. The entire universe and beyond. You know, we live in this dunya and we are fascinated with this dunya which Allah subhanahu wa ta'ala indeed has created in a beautiful manner. We're fascinated. There are over billions of people which live on this dunya at this moment in time. Over 6 billion people that live on the dunya at this moment in time. This dunya of Allah subhanahu wa ta'ala is so big that there is space in this dunya for billions and billions and billions or more people. But what is this dunya in comparison to what Allah subhanahu wa ta'ala has created out there? This dunya is insignificant. This dunya is meaningless to Allah. It means nothing. It is worthless. So worthless, compare it with the sun. The sun is one star. You know more science than me. You'll be able to tell me better. Take this planet Earth and you place it inside the sun, and you will be able to place 1.3 million Earths in the sun. 1.3 million Earths in the sun. Allahu Akbar. Allah is the greatest.
The sun is one star. One star. There are stars out there which are millions of times bigger than the sun. You tell me this, that you need millions and millions of stars to make one galaxy. And then you tell me this, that there are zillions of galaxies out there. Let me tell you on top of this, my friend. After this, whatever you see above, when you raise your head and you look above, whatever you see above, the zillions and zillions and zillions of galaxies, let me tell you, everything there is within the first heaven. Everything there is within the first heaven, and Allah is the creator of 7 heavens. 7 heavens. And the distance between the first heaven and the second heaven is 500 years. You know, the distance that can be covered in 500 years, at what speed? Only Allah knows. Only Allah knows. But it will take 500 years to get from the first heaven to the second heaven. 500 years from the second to the third, third to the fourth, fourth to the fifth, fifth to the sixth, sixth to the seventh. Every time it will take 500 years. My God. After the 7 heavens, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. You all read the Ayatul Kursi. You all know the Ayatul Kursi. After this, you have the Kursi of Allah. You have the chair of Allah subhanahu wa ta'ala. You know these 7 heavens that we've just talked about, in comparison to the Kursi of Allah, they're non-existent. They're meaningless. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has given an example in a hadith, just to give us a little bit of understanding with regards to the 7 heavens in comparison to the Kursi of Allah. Take a ring from your finger, take it up, the small ring that you have, and place it, let's say, in a desert, the Sahara desert. It's the biggest desert in the world. You know that ring that we take off from our fingers and place it in the Sahara desert? What comparison is in between the ring and the Sahara desert? No comparison. Nothing. Nothing. The 7 heavens is the ring, and the Kursi of Allah is the Sahara desert. After the Kursi of Allah, you have the Arsh of Allah. وَكَانَ أَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. You have the Arsh of Allah. Again, Rasulullah has explained, so just so that we can understand. Take the ring, place it in the desert. This time, the ring is the Kursi and the Arsh is the desert. What is the Kursi in comparison to the Arsh of Allah? Nothing. Then you have angels which carry the Arsh of Allah. Their heads are in the 7th heaven and their feet are in the lowest earth. My friends, then you have the Lord of the Arsh al-Kursi. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. He is beyond the size of Allah, who Allah is, what Allah is. The greatness of Allah is beyond the comprehension of my little mind. This is the being that you and I are messing with. जो भी है वो कोई एक ही है. Who is there that can intercede with him and surprisingly? Correct? يعلم ما
He knows what is before them and what is behind them. His creation. I mean, हम लोगों के पहले क्या है, हम लोग के बाद क्या है, हम लोग के पहले की जिंदगी में क्या हुआ, हम लोग के बाद की जिंदगी में क्या आने वाला है, सब पता. But they do not comprehend any of his knowledge except what he wills. Feels no fatigue in guarding and preserving them. He's the Most High, the Tremendous. Wow. बहुत ही उम्दा, बहुत ही ज़्यादा उम्दा. मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को ना पता नहीं रहती है, जो कि हमें इन सब वीडियो के बारे में पता चलती हैं. तो यस, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही है वो जिसने दुनिया को बनाया है, सिर्फ एक ही है वो जिसके कारण दुनिया चल रही है, सिर्फ एक ही है वो जिसके कारण हम चल रहे हैं. तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है. टू बी फ्रैंक, जिस तरीके से एक स्पीकर ने कहा था, लास्ट वाले स्पीकर ने, कि हमारा क्या ही औकात है, क्योंकि हम जैसे तो इतने सारे लोग इस अर्थ में ही रह रहे हैं और अर्थ का ही कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. अर्थ के जैसे कितने सारे प्लैनेट्स एक सन में समा सकते हैं, तो सन के जितने कितने सारे स्टार इस मिल्की वे गैलेक्सी में, और इसके जैसे ही, इस गैलेक्सी के जैसे ही न जाने कितनी गैलेक्सीज हैं. एंड ये सारी चीज़ें फर्स्ट हेवन में आती हैं. ओ माय गॉड. उसके बाद बाकी सारी चीज़ें और भी हैं, बहुत सारी चीज़ें. एंड सच में जो भी बनाने वाला है, जिसने भी ये सब चीज़ें बनाई हैं, वो बट ऑब्वियसली बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रांग है. तभी उसने इतनी सारी चीज़ों को क्रिएट किया, इतनी सारी चीज़ों को वो मैनेज कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ों को लेकर के वो चल रहे हैं. और हमारी एक लाइफ है, उस लाइफ में जो भी हम अच्छा बुरा करेंगे वो सब टेस्ट है. वो कहते हैं ना कि जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल हमें इसी जन्म में भोगना है. तो दिस इज अ टेस्ट. आप अच्छा करो या बुरा करो, जैसा भी करो, उसका रिजल्ट आपको मिलते चलेगा. और इसके बेसिस पे आपको आपके नेक्स्ट, इसके बाद ही जो आफ्टर लाइफ आने वाली है, उसमें आपको पता चलेगा कि आपने कैसे कर्म किए. तो भाई साहब समझ जाओ, यहीं से अपने कर्म सुधार लो. और इतने सारे स्पीकर्स को मैंने सुना है, कहीं मैंने ये नहीं देखा है कि कहीं कोई लड़ाई के लिए कह रहे हैं, कहीं कोई नफरत के लिए कह रहा है. इनफैक्ट मैंने मौलाना तरीक जमील की जो बयान सुना था, उसमें तो सीधा यही कहा था उन्होंने कि मोहब्बत चाहिए दुनिया में, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत. तो ये कौन लोग हैं जो लड़ाई करते रहते हैं? कौन है तालिबानी, कौन है आतंकवादी, कौन है ये लोग जो लड़ाई करना चाहते हैं? ऐसा तो कहीं किसी भी मुस्लिम स्पीकर ने नहीं कहा कि लड़ो या कुछ भी करो. तो ये लोग कौन सी कुरान पढ़ते हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं जो इनको इतना लड़ाई चाहिए? दिस इज कम्प्लीटली आउट ऑफ माई माइंड. ऑन दिस नोट आई विल एंड द वीडियो. द वीडियो वॉज अमेजिंग. जिन लोगों ने भी मुझे इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट की थी, थैंक यू सो मच रिक्वेस्ट करने के लिए. आप लोगों के कारण मैंने ये वीडियो देखा. Here I will sign off. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.